Okay, fine, guys. I think my screen is visible. If not, I don't know. I can't do anything. Yes, my screen should be visible. So I got new pens. Wait a second, guys. Okay, guys. ठीक है. I will be live now for some time. I'm going to be live. Guys, let's start. आज कौन सा क्वेश्चन मिला है आपको? बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं मतलब. Oh, this is so pretty. Fine. ये लोग थोड़ा सा डीपी से नहीं करते हैं. ये पेन मुझे काफी अच्छा लगता है. मेरे पास पहले दूसरा पेन था, पर ठीक है. मैं ये वाला ले आई आज. लेके आए हैं. Oh shit, मुझे ब्लिंकिट ऑर्डर का नोटिफिकेशन आ रहा है. It's fine. Four. Okay. Graph.
What direction? Good question. Isn't like this? I have so many questions here. Like, why are we not solving it as a graph? And then, uh, where are we considering that it becomes a square? Why are we moving only in three directions? Uh, we are moving in three directions only for in order to reduce the chances, or no, so that there is no recursive loop. Is that so? Let me check. This is a good question, actually. Very nice question. You can model this matrix as a graph, but the actual problem is squares. So this is not really the shortest path, connectivity, traversal, cycle formula. This is not a typical graph problem. Instead, the problem is at every cell, what is the largest square I can form starting from there? This becomes a TP problem, not a graph diversity problem. What does this help? This is the most important thing. DP state problem. Returns the side length of the largest. It returns the side length. Top left corner is this.
So it's this. If I start a square from this, how large can the square become? Why are we checking it forms a square? This is the heart. So write down diagonals with this. All the three neighboring regions must also support squares. Yeah. Suppose current cell is this. To form a square, right side square, bottom side square, diagonal side square. Do I agree? Yes, I agree. So this is why it's a minimum plus one. This line is literally the square validation. Why minimum? Because obviously it cannot go more. So in that side, let's say the minimum is only this. So it will be part of that. But it is not. For example, this only. It's a square, right? It's not minimum, which is 0. Okay, fine. It then will not be a square. If whatever square it forms, let's say this is a square, this is also a square, this is also a square, so it's going to. Sorry guys, मेरा बहुत सारे disturbance. Sorry guys, मैं बहुत ज़्यादा disturbed हूँ. Sorry guys, बहुत सारे disturbance हो गए थे, call आ गया था. ठीक आप सही है. एक नंबर सवाल है ये. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बहुत सॉरी. काफी अच्छा सवाल है. बहुत अच्छा. मजा आ गया. ये होते हैं सवाल. एक नंबर सवाल. अमेजिंग. डीपी ऑन साइड. स्क्वायर की साइड पे टिक लगानी है. मुझे पिछली बार याद था और फिर भी मैं निकल पाई. भाई कोई दिक्कत नहीं है. कॉइन चेंज ये काफी बार रखा है. भाई बढ़िया है भाई. ये एक नंबर की शीट है. सारे बढ़िया बढ़िया सवाल हैं शीट में. शीट मेरी लाइव कहाँ गिरी. लाइव होना. बहुत बढ़िया सवाल है. बहुत बढ़िया सवाल था. अच्छा knapsack है. many knapsack. 01 knapsack और उससे दूसरा many knapsack क्या होता है. मैं थोड़ा भूल गया. 1 many 01 knapsack 1 many knapsack. This was the name. या probably unbounded knapsack बोलते हैं. 1 many unbounded knapsack. infinite knapsack. हाँ ये infinite knapsack का सवाल है. infinite knapsack. ठीक है करते हैं. And obviously knapsack is a typical type. जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक करते जाओ. ठीक है. काउंट भी तो. बहुत मजा आता है सिर्फ टक टक करके शोर मचाने का. जबकि जरूरत नहीं है. धीरे भी हो सकता है. इफ अमाउंट और इंडेक्स कौन भेजेगा. 2D डीपी है और देने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट 0 कर लो. वो इंटरेक्शन बना. ठीक है. अगर अमाउंट और अमाउंट इज इक्वल टू 0
रिटर्न 0। और कौन सी नहीं है? और अगर अमाउंट 0 हो गया तो भी रिटर्न 0 करो, ये हो गया तो भी, क्योंकि बन चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेंगे कॉइन्स को। ठीक है, 1 प्लस, क्योंकि टेक किया तो 1 प्लस कर देंगे, कॉइन्स अमाउंट माइनस कॉइन्स इंडेक्स, सॉरी इसको क्वांटिटी में रिड्यूस कर सकते हैं क्या? इंडेक्स को काउंट से फेच कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। काउंट क्यों रख रहे हैं भाई, काउंट की जरूरत ही नहीं है। ये लो, काउंट की जरूरत ही नहीं, हटा दिया। क्वांटिटी पे है, हटा दिया। ठीक है, इंडेक्स प्लस 1 टेक करते टाइम, टेक एंड मूव, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, int take and stay, which is still this, and ये हो गया। take and stay में index plus 1, don't take, इसमें तो होगा index plus 1। ठीक है, don't take में don't take में take नहीं लिया तो obviously plus 1 जाएगा हमेशा, और इसके अंदर ये भी नहीं होगा। ठीक है, और रिटर्न क्या करना है, मिनिमम। और इसके अंदर ना एक वेक्टर बना सकते हैं इसका, मतलब वो मिनिमम एक्चुअली 2 के लिए सपोर्टेड है, बट अगर हम इसके अंदर एरे ले लेंगे तो वो एरे का मिनिमम दे देगा। ठीक है, कंपाइलेशन एक सेकंड, इंडेक्स है यहाँ पर, और इसको अभी मेमोराइज भी कर देंगे, चल जाए तो। ओए लूप, ओहो, आई फाइल दोबारा देखते हैं। हम्म हम्म हम्म, ठीक है, क्या बोलते हैं। Hi, please make Java videos. Also, C++ is tough to understand. Okay, I will make Java videos on this weekend. I will make Java videos because I am learning Java syntax. Okay, I will make over the weekend. Thank you for your comment. एक सेकेंड गाइस, हाँ ठीक है, टीएल ही आया, बट वेट रुको, हेल्पर कॉइन्स अमाउंट 0 और लेस देन इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा माइनस हो गया तो लेस देन इक्वल टू 0 जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक एक दिक्कत है, रुको, क्योंकि वो मिनिमाइज हो जाएगा। ओनली डू दिस, सी इफ कॉइन्स का इंडेक्स is greater than equal to amount, only do that in those cases. Okay, fine, only do in that case, otherwise take move as int max and इंडेक्स पे छोड़ दिया तो दूसरा वाला अपने आप हैंडल हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तीसरे वाला कंडीशन वाली जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, ताकि वो नेगेटिव ना हो, चल जाना चाहिए। ओह, इसको हटा, ये हटा दिया हमने। ओके, दी थैंक्स, ओह वेलकम। एक सेकंड, और अब इसमें एक और कर दिया। एक मिनट, अब सही है। अगर अमाउंट लेस देन हो गया, 0 होगा तभी, लेस देन हुआ तो पॉसिबल नहीं है। टेक करना है तो तभी, सिर्फ तभी उन्हीं केसेस में लेंगे जब उसकी वैल्यू होगी अमाउंट से बड़ी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 नहीं होनी चाहिए। और टेक करने के बाद 1 प्लस हेल्पर कॉइन्स अमाउंट में से घटा दिया जाएगा और इंडेक्स, और 0 हो जाएगा बिल्कुल, या तो साइज तक हो जाएगा, यही हो जाएगा, और इंडेक्स भी रहेगा, क्योंकि जो बताया।
ठीक है। क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, ठीक लग रहा है बहुत। छोटी मोटी गलती भी देखते हैं तो। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि मिनिमाइज होने की वजह से नहीं हो रहा। यहाँ पे ना इंट मैक्स रखना पड़ेगा, क्यों बन नहीं सकता अमाउंट। एक सेकंड, ये ना बेस केस गलत है इसका। अगर ये 0 तक पहुंच गया और अगर अमाउंट 0 हो गया, अगर अमाउंट, ये तो हमेशा आंसर वो आएगा क्योंकि वो उधर से दूसरी ब्रांचेस से आ जाएगा धीरे धीरे। अगर अमाउंट हो गया 0 तब तो कोई नहीं, शांति की बात है, क्योंकि हमें और कॉइंस की जरूरत नहीं है। नहीं तो इंट मैक्स रिटर्न करेंगे। आई थिंक सब फिक्स हो जाना चाहिए। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? रिटर्न नहीं हो रहा। एल्स एल्स रहने देते हैं नहीं। वेट, ओवरफ्लो एरर। 1 प्लस कर रहे हैं ना, ओवरफ्लो एरर, तो लॉन्ग ले लो इसे। लॉन्ग 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 लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उधर पहुंचेगा नहीं। ये 1 प्लस की वजह से दिक्कत आ रही थी। क्यों मिनिमाइज हो गया, इंट मैक्स जाएगा। इट शुड वर्क नाउ। वेट वेट 1 सेकंड। हेल्पर, अगर इंडेक्स कॉइंस के साइज तक चला गया, अगर अमाउंट 0 हो गया, ओनली इन दोस केसेस रिटर्न 0, कि ये अब और कॉइंस की जरूरत नहीं है। नहीं तो वो बन नहीं सकता कभी भी। रिटर्न इन मैक्स बिल्कुल सही। टेक इज इन मैक्स बिल्कुल सही। ए इंट मैक्स, ठीक है। अगर इंडेक्स से बड़ा है, छोटा है, सॉरी सॉरी, छोटा होना चाहिए ना, सॉरी, अमाउंट के बराबर या छोटा होना चाहिए, सॉरी। अब चल जाना चाहिए। एक सेकंड, क्या है? दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन दिस। वेट, डू दिस। द हेल, इतने आसान क्वेश्चन में थोड़ा ठीक है, ये चल पड़ा। एक ये इसमें, अच्छा अगर नहीं बन सकता तो माइनस वन रिटर्न करो, सॉरी। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। इंट आंसर विच इज दिस, और अगर आंसर इंट मैक्स आ गया मतलब नहीं बन सकता, तो हम क्या करेंगे, और इसको लॉन्ग करो, सॉरी। और उसके बाद इफ आंसर इज इक्वल टू इंट मैक्स देन ऑलवेज रिटर्न -1, एल्स रिटर्न द आंसर। ठीक है, चल जाना चाहिए। वर्कड। अब एक बार इसको ना मेमोराइज कर लेते हैं साथ के साथ, या पहले एक बार टीएलई निकाल लेते हैं, समझ करके टीएलई ले लेते हैं। ठीक है, टीएलई आएगा। ये टीएलई आ गया, और अब इसको मेमोराइज कर लेते हैं। एन की वैल्यू कहाँ, इंडेक्स वैल्यू 0 टू पॉइंट्स डॉट साइज, और +1 लेना हमेशा, क्योंकि देखो यहाँ पे जा रही है साइज तक, तो +1 लेना, नहीं तो n-1 की वजह से दिक्कत आएगी। और इसको -1 लेना है, इसको ले लेते हैं इंट -2 ले लेते हैं, क्योंकि -1 इज अ पॉसिबल आंसर, बट वो अभी नहीं है, वो बाद में रिटर्न करने वाला है, तो ठीक है, वो डीपी तक पहुंचेगा नहीं। इसको ऊपर बनाओ, डीपी के कॉल के ऊपर बनाओ, और इसको पास कर दो डीपी। 1 डीपी का क्वेश्चन हो गया, वेक्टर इंट डीपी है। और यहाँ पे क्या करो, अगर डीपी ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1, रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स, ठीक है। और इधर डीपी ऑफ इंडेक्स को पॉपुलेट भी करवा दो, लेकिन यहाँ पे डीपी भेजना मत भूलना। ये इसकी इंपॉर्टेंट है कि वो उसको भेजने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ओवरऑल इसके अंदर हैंडल हो जाएगी, कि जो स्टे और वो दो रास्ते लगाने की जरूरत नहीं थी। कुछ गलती कर दी। एक मिनट, क्या करा रुको। डीपी ऑफ इंडेक्स इज नॉट दिस। ठीक है, यहाँ पे करवाया पॉपुलेट -1, ओके। डीपी मैं वो ऐसा नहीं, बात करना बंद हो गया बोलते हैं, पर ठीक है, अभी सॉल्व कर देते हैं इसे। रुको रुको रुको, कोई गलती कर दी डीपी में। वेक्टर इंट कॉइन टू साइज +1, 0 इंट मैक्स है तो -1, ठीक है, सही है। डीपी
अमाउंट 0 हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो पॉसिबल ही नहीं है। -1 है तो रिटर्न करो आंसर। मेमोराइज किया, टेक मूव लिया, ये सही लग रहा है भाई, क्या गलती है? What is the mistake here? Oh shit. Oh shit. Oh shit. अमाउंट भी तो वेरिएबल, अमाउंट भी तो डायनेमिक है 2DDP। एक मिनट सॉल्व कर, ठीक कर देता हूँ। अब ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम अमाउंट तक ही जाएगा 0 से, और अमाउंट +1 करते हैं, और ये 2DDP में ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट सॉरी वो रिकर्सिव 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 फंक्शन में जितने चेंज हो रहे हैं ना उन सबको कंसिडर करना पड़ता है, जितने वेरिएबल हैं, मतलब डायनेमिक है। सॉरी काफी टाइम हो गया ऐसे हो गलती। सॉरी यहाँ पे आएगा, चल जाना चाहिए। ठीक है चल पड़ा, ये बस सबमिट करके देखते हैं। चल पड़ा। पहले मैंने कैसे किया था इसे? मई 29 में किया हुआ। अच्छा, कैसे किया, ये क्या किया? सॉर्ट कर दिया मैंने। ओ ग्रीडी लगाया इसमें थोड़ा। हाँ, सॉर्ट नहीं किया है, एक 2D वेक्टर बनाया है, एंड हमने क्या किया? अच्छा -1 हमने दिखाया, वो अनइनिशियलाइज हमने -2 देखा है, स्टेट डीपी और टेक ये किया है। अगर ये वैल्यू से कम है और ये इससे कम है तो ये क्या? हाँ तो टेक, हाँ ठीक है, नॉट टेक किया है आंसर, टेक नॉट टेक। ये क्या इतना लंबा किया, कोई जरूरत नहीं है ये, ठीक है मेरा। और कोई तरीके से क्या मैंने मेक इसको भी किया इसे, ठीक है, और इसको भी किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉट कंप्यूटेड वाला -1 है, पर मैंने इंटर में एक्सेप्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक सेकंड, मैंने 2D लगाया ना उसके अंदर, इसके अंदर मे 15 को मैंने 2D लगाया। नहीं मैं 2D नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई है? क्योंकि हमें काउंट की जरूरत थी नहीं, काउंट की जरूरत तो थी भी नहीं, इंडेक्स की थी, पर इंडेक्स की क्या हमें जरूरत है? फॉर लूप लगा दिया है मैंने, फॉर लूप से एक कम हो जाता है, ये फॉर लूप से हमें इंडेक्स की जरूरत नहीं पड़ती, पर इसके अंदर मैंने 2D बना दिया। ठीक है, वो कैसे भी कर लो आप, थोड़ी सी स्पेस वगैरह होगी। इसमें 2D बना दिया। हाँ, तो every normal problem, most of the DP problems can be converted, like every 2D, almost all 2D DP problems can be converted into 1D if जो एक पैरामीटर जो चेंज हो रहा है दैट इज इंडेक्स, बिकॉज इंडेक्स को हमें हर रिकर्सिव स्टेट में रखने की जरूरत नहीं, रिकर्सिव कॉल की स्टेट में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम फॉर लूप से फेच कर लेंगे, जिसकी वजह से एक डीपी में मेमोराइजेशन का पैरामीटर हट जाएगा। जैसे ये देखो, यहाँ पे इसने नहीं लगाया तो इसने रख लिया इंडेक्स, और यहाँ पे इसने क्या किया, मैंने क्या किया था, इसने नहीं, मैंने क्या किया था, इसने चल नहीं रहा, ये रहा, हाँ इसमें देखो मैंने इंडेक्स नहीं रखा, क्यों नहीं रखा इंडेक्स? क्योंकि मैंने फॉर लूप लगा दिया, मैंने फॉर लूप लगा के सब पे देख लिया। या ये सब कॉइन्स पे एक बार चेक करेगा, ये इतना इंट्यूटिव नहीं है, ये सारे कॉइन्स को लेगा, ये सब पे एक बार चेक करेगा, और ये रिकर्सिव कॉल जैसे ही यहाँ पे आएगी दोबारा ये उसे लेगा, ये उसे लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा, और जैसे ही वो बंद हो जाएगा वो नेक्स्ट वाला लेगा। ठीक है, फाइन, सेम है। एक सेकंड, एक के अंदर, अब एक के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही सेम है, क्योंकि एक के अंदर बाहर एक लूप लगेगा अमाउंट पे, और अंदर एक लूप लगेगा, अंदर फॉर लूप लगेगा इंडेक्स पे। ठीक है, 2 raised to power n बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। एक सेकंड, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो,
time complexity of this is amount into index. Yes, the time complexity is amounting to n. But for mine is also amounting to n, so it's fine. The space complexity is less here, but it's fine. अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है छोड़ो. Let's move on. No, this is not Aces Vivo book. क्या प्राइस है इसका? What? India. Which is quite cheap. This is MacBook. Hi. Kernel panic. Wow. So you work on kernel. I've also worked on kernels. बहुत गर्मी हो गई है आज. यहाँ पे बहुत गर्मी है. हीट वेव चल रही है यूके में. बहुत गर्मी है आज भाई. कल इतनी गर्मी थी, पसीने आ रहे थे, और आज बहुत गर्मी है. बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा. इंडिया की गर्मी आ गई है यहाँ पे. और आज तो मैंने पर्दे लगाए हुए हैं. बहुत गर्मी है. This is so hot today. नीचे सॉरी गाइस, लेट्स स्टडी. ठीक है, आज मेरा टारगेट है ओए नहीं हो सकता भाई. बहुत लंबा है डीपी, कंप्लीट नहीं होगा, बट ठीक है, जितना होता उतना करते हैं. हमारे पास रात तक का टाइम है. ओए 6 बज गए. चलो पूछती हूँ डिनर कब जाएंगे वो लोग, फिर मैं जाऊंगी. एक मिनट से आधा घंटा हुआ है क्या? अभी नहीं जाऊंगी मैं डिनर में. एक सेकंड, मुझे कुछ मेल आया, वो पढ़ रही हूँ इसलिए. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. Okay guys, sorry for the disturbance. Let me try to study now. बहुत गर्मी है भाई. ओ भाई, मैंने इस सवाल को कर रखा है स्टार. क्या लिस्ट है, बहुत अच्छी लिस्ट है, क्योंकि इसके अंदर मेरे फेवरेट क्वेश्चंस अपने आप आए जा रहे हैं. बहुत अच्छी लिस्ट है ये, 100% रिकमेंडेड. और इसके कुछ क्वेश्चन तो इतने अच्छे थे, मैं पूरी रात सोच रही थी. जो कल मैंने किया था डिलीट एंड अर्न, मैं पूरी रात उसके बारे में सोच रही. बहुत प्यारा सवाल था. ठीक है, पर ये वाला सवाल अच्छा है क्योंकि मैंने इसे स्टार्ट किया हुआ है, तो ये अच्छा होने वाला है.
और बहुत गर्मी है। रिटर्न एन इंटीजर एरे नम्स। एक सेकंड रूम को होल्ड पे रखना। एक मिनट मैं एक सेकंड में रूम को होल्ड पे क्या क्या ठीक है। Find the subarray that has largest product and return the product. Oh god, I remember this question. इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि नेगेटिव्स थी, नेगेटिव नंबर्स थे। ठीक है, जैसे 2, 3, -2 और 4। देखो, product of 2 negatives is positive, we can take that. Product of 1 negative is what we don't want to take, and product of all positive is also what we want to take. So we have to first figure out all the negative numbers, and a possible product can be product on the left, product on the right, or product of all. Yes, I think this is not a graph DP question, but let me just remember. और इसके अंदर हमें जीरो भी अवॉइड करनी है, जीरो भी अवॉइड करना है, नहीं तो पूरा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। फाइन। हम क्या करेंगे? कैलकुलेट द काउंट ऑफ negatives. If negatives is even, no problem. The answer is going to be the complete array का product. But if your negative is odd, you have to leave that negative. That negative can be in middle, so you have to take this side or this side. Now, how do I figure out which negative to leave? Go to every number, calculate the prefix product, calculate the suffix product. On every number, if it is negative, left or right, then next number ON में solve हो जाएगा, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, अगर जीरो हुआ तो दिक्कत है, अगर जीरो हुआ तो उसे लेना नहीं है, स्किप करना है। बट अगर सारे प्रोडक्ट्स नेगेटिव हैं तो उसको लेना पड़ेगा। अगर सारे नंबर्स नेगेटिव हैं, ये मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं इंप्लीमेंट करके देखती हूँ, बट एक भी पता नहीं है, चलेगा नहीं। वेक्टर इंट प्रीफिक्स प्रोडक्ट, वेक्टर इंट सफिक्स प्रोडक्ट। क्यों लेना है सफिक्स और प्रीफिक्स प्रोडक्ट? क्योंकि हमें लेफ्ट में भी लेना है प्रोडक्ट और राइट में भी लेना है। ठीक है, in product starts from 1 for auto and I in nums. Prefix product dot push back product, and if product is equal to product or multiply is equal to 1. Multiply is equal to, I don't know if this operator is overloaded, I'm not sure, देखेंगे कि error आएगा कि नहीं। अब दोबारा क्या करूं? Start from back and reverse it, or just make it of size and then do the changes in place, which is one option. What should I do? I will just use this. What would I have done if I wanted to write a good design in an interview? I would just have created a function out of it and given a reversed nums to the function again. That would give us a fixed product. But now what I'm going to do is different. I'll just run a for loop from back. It's incredibly hot right now here, very hot. ठीक है, सफिक्स के अंदर सफिक्स प्रोडक्ट के अंदर पुश बैक करो ये, and then don't forget to reverse it, which is again off, and so बहुत सारे off and operations, and this is not optimized obviously, but I just want to write a solution first. Now what we do is we have max product which starts from 0, and what do? We return this max product. Then what we are going to do is now run a for loop of p on what? On nums. If
Sorry, we also need the index for int I start from 0, I is less than nums dot size I plus plus. If nums of I is less than 0, then we take a suffix product and a prefix product. But do we do it on all cases? I don't think so, because the only problem is this, so it's fine. If it is equal to b0, then also we did int left product is equal to prefix product I minus 1. अच्छा अच्छा वो पूरा तो उसमें आ जाएगा ना. हाँ ठीक है ठीक है. int राइट प्रोडक्ट. अच्छा अच्छा एक काम करो, दोनों साइड 1 से कर दो. एक बार 1 से दोनों साइड गार्ड्स लगा दो. गार्ड रीडिंग वो वाली गार्ड रीडिंग नहीं है, एलएलएम वाली है, नॉर्मल गार्ड्स है, ताकि वो इधर उधर की हैंडलिंग में ज्यादा दिक्कत ना आए. करूं या यहाँ पे हैंडल करूं? ओके एक काम करती हूँ, कर लेती हूँ. int लेफ्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू int min, ताकि वो इफेक्ट ना डाले, है ना. और int राइट प्रोडक्ट इज इक्वल टू int min, और उसके बाद क्या करते हैं, एंड I minus 1 should be greater than equal to 0. Only then update the left product as this. We actually have to take the maximum, and min is not going to make an impact. And right product is suffix product I plus 1. We have to take only the back number. Yeah, that's fine. And I plus 1 is less than nums dot size. ठीक है. Else if leave this there and take it inside. If then do this. We don't have to do this much. See, break it into two conditions. If I minus 1 is greater than equal to 0, update this, which can be done without these brackets. And if this is that there, we just also delete it simultaneously, and we take the right product. That's it. Yes, this should fix it and remove this. So this is very simplified now. Now what do we do further? Sorry, I was busy. Now what do we do? Okay, max product is equal to max of left product and right product. Now what do we do? Also, don't forget to take max product is equal to max of max product. Oh, sorry. Take 3 elements at once, which is also max product. From back. And then what we do is max product is max product and suffix product dot prefix product dot back. Prefix product dot back. I'm not sure if this is going to work, but obviously I can try.
line 7 and 14. ठीक है, we don't need that. Reinstanciation, redefinition. Just remove this. So at least the first one out. The second one didn't because it was 0. It's 0. How did we get to 2? Wait. How did we get to 2? 2 should never happen. Wait, what? Wait. They should never happen. Started from 0. Oh shit. Max product start from 0, right? Into wait, there's some mistake here. Your logic is I is in the shit. Wait. I'm so sorry. It should be fine now. Wait. I'm not sure if this will work. Let me try. Oh my god, 162 worked at least. Yeah, that's good. Logic is correct. The answer should have been 1. The answer is not 1. You also take a max of at all times. Like all times. Okay, not bad. Like most of the test cases pass. But what's the problem here? Oh wait, you did not take the ones in between. Do we do a 2-pointer approach? For example, here it should be 6. But it didn't take 6. The problem here is that you take this and this. Now so you need this or this. I remember that this is right, but there is 0 brings 2 negatives. Oh, I did solve it the same way. What the hell? Max suffix product. This. Wow, I solved it the same way. There is some difference in my answer though. Maximum answer, prefix product, suffix product. If the number is 0, maximum answer is this. Prefix product is 1. We have avoided all zeros and taken products. Just do it from both sides. Do it from both sides. This is similar to Padans algorithm. So similar. Maximum products are very maximum
some subarray. This is just Kadans algorithm. We remove the negative ones. Shit. The byte are not taking it on both sides. 0 to 0. Let's say we take this. But we didn't take that, right? Took it. The numbers will not be the same, but we are eventually taking it. Why are we two iterations here? We're not skipping sentences ever. I'm very hesitant. Take the whole both ways. Because it's product. It is product. Okay, fine. Point. It has some point. Wait, but I did it some other way. Yeah. I did it some other way here. Should have solved it with Kadans, but it didn't work. Because I thought it would be Kadans. Weird. This is the answer I was looking for. Maximum product up to the current position, maximum product up to the current position. Final. No, the two passes better. Oh god, this question is pathetic. This would be the right answer, but then it's pathetic. Wait, let me write the comments. The direct implement, highly non-intuitive. Even if you figure out the idea, very difficult to implement. Really, this is tough question. Very tough. ऊपर से बहुत गर्मी है. But it is two-way because of this thing. This question is typical. Maximum length of repeated subarray. I don't know if I've started this. I'm not even done this question. Fine. I have 6 minutes. So गर्मी कितनी गर्मी है. Stay hydrated. That's all that I can do. Given two integer arrays, nums1 and nums2, return the maximum length of the subarray that appears in both arrays. ठीक है. Let me try. Super hot. We can't even control the temperature here. Let me try to
It is fine outside, but it is very hot here. The repeated survived with maximum length is this 3 to 1. Is this 2 pointer? Right. Thinking. Common, longest, common, subsequence. This is LCS. This is LCS variant. Take 2 pointers. Try. Fine. I start from 0. J start from 0. Oh, I think let's just return this. Time. Sorry. Return helper nums1, nums2, 0, 0. Int helper vector int and nums1 vector int and nums2 int I int j. Fine guys, जल्दी से कोड कर देते हैं. अगर I पहुंच गया है अंत तक, if I is equal to nums1 dot size or j is equal to num2 dot size, रिटर्न 0, क्योंकि कुछ भी इक्वल नहीं है. स्पेस डाल के छोटा करो अच्छे से. ये देखो ऐसे हम साफ हो गए ना. अब क्या है नेक्स्ट? अगर nums1 का I तो nums2 का j रिटर्न 1 plus helper nums1 nums2 I plus 1 j plus 1. सारे केसेस आ जाएंगे. इसमें ब्रांच ही बना के देख सकते हैं. नहीं तो रिटर्न मैक्सिमम और 2dd क्या हेल्पर nums1 nums2 I plus 1 j. मैंने इसको कॉपी कर लिया ऐसे चल जाना चाहिए. लेट्स सी. फिर मैं डिनर करने जाऊंगी. ये क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है, यहाँ पे इस लगाओ. ये लो. चल पड़ा. ठीक है. अब इसे वेक्टर ऑफ int dp nums1 dot size plus 1 vector of int nums2 dot size plus 1 minus 1 क्योंकि पॉसिबल साइज नहीं है dot dp और इसके अंदर लिखा एंड लगाना होता है. ठीक है. अब क्या करना है? Overlapping some problems. That's a concept, right? Fine. Next question. लेकिन
ये तो LCS था ना। ओह रॉन्ग आंसर भी आया है मेरे को। रॉन्ग कैसे आ सकता है? तो साइंस हुआ था। क्या बोला है इसने? 3 का 2 बना दिया। सब एरे होना चाहिए, सब सेट नहीं। कंटिन्यूस नहीं हुआ तो आंसर 0 होना चाहिए। इसलिए LCS सुपर सीक्वेंस देखता है, सब सीक्वेंस। नहीं तो 1 प्लस नहीं कैसे कैसे होता है? लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस repeated not scattered, yes, not storing here indeed. But I'm not storing here, let's see. But it's fine. Length should become 0 every. ठीक है, लंच करके करेंगे। बाय गाइस, मैं डिनर करने जा रही हूँ।